अस्सलाम वालेकुम। BSN फर्स्ट सेमेस्टर। आज हम FON यूनिट नंबर 3 गोल ऑफ नर्सिंग एंड रिलेटेड कंसेप्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो पेपर के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट है। आज की लेक्चर में हमने कवर करना है डिफाइन बेसिक ह्यूमन नीड्स, डिस्कस बेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस, डिफाइन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, explain model of conceptual framework for generic BSN program, explore nursing and nursing practice, define goal of nursing process, identify historical perspective of the nursing। तो ये चैप्टर इंतहाई इम्पोर्टेंट है पेपर के हवाले से और हमने कवर करना है ये 7 ऑब्जेक्टिव। तो चलिए एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं। The list of minimal element that human being require for life and strive for attaining them is called basic human needs। तो राइट ऑप्शन है डी। आज के लेक्चर में आपने सारे डिफिनीशन को याद करना है और एक बार रीड करना है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट डिफिनीशन है आज के लेक्चर में। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इज बेस्ड ऑन विच प्रीमिसेस। तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, जिसमें ए नंबर है ऑल ह्यूमंस एक्वायर ए similar set of motives through genetic endowment and social interaction. Some motives are more basic and critical than others. As the basic motive become satisfied, more advanced motive come into play. तो right option है D, all of the above. Maslow hierarchy of needs include all except which all the following। except की बात हो रही है, मतलब कि कौन सा नहीं है, तो cognition। तो राइट ऑप्शन है ए, जिसमें फिजियोलॉजिकल भी है, सेफ्टी भी है, बिलोंगिंगनेस भी है। तो राइट ऑप्शन है ए। इन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स फूड, वाटर, स्लीप एंड टू एन एक्सटेंड सेक्स आर कंसिडर डैश मोटिव। तो ये कौन से मोटिव में है? फिजियोलॉजिकल मोटिव में है। तो राइट ऑप्शन है सी। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये इससे तकरीबन इस चैप्टर से 15 तक एमसीक्यूज आते हैं। तो ये चैप्टर आपने बिल्कुल गौर से देखना है, सुनना है और रीड करना है। Many victims of Hurricane Katrina were left without their home, food and water. Based on Maslow hierarchy of needs, which motive were activated for these individuals? तो फूड एंड वाटर, होम्स, ये मोटिव है फिजियोलॉजिकल की। तो राइट ऑप्शन है डी। स्मोक डिटेक्टर, प्रिवेंटिव मेडिसिन, इंश्योरेंस, retirement investment, seat belt and sunscreen are all example of product to consumers dash needs। तो ये कौन से needs है? सीट बेल्ट, सनस्क्रीन, ये सब सेफ्टी की है। तो राइट ऑप्शन है ए। Which need in Maslow hierarchy reflect a desire for love, friendship, affiliation and group acceptance। तो ये किस चीज के? लव, फ्रेंडशिप, ये बिलोंगिंगनेस की है। तो राइट ऑप्शन है सी। Which of Maslow needs involve the desire for self-fulfillment to become all that one is capable of becoming। तो right option है B, self-actualization। It is a state of well-being and it means engaging in attitude and behavior that enhance the quality of life and maximize personal potential is called wellness। तो right option है D। Dash is an approach that improves the quality of life of patient and their families facing the problem associated with life-threatening illness through the prevention and relief of suffering. It means of early identification and impeccable assessment and treatment of pain and other problem physically। तो right option है B, palliative care। World Health Organization was established in 1948। तो right option है D। ये इंतहाई important एमसीक्यूज है, ये हर बार पेपर में आता है, तो को आपने याद रखनी है। When was the idea for a global health agency proposed at the United Nations Conference on International Organization held in California? तो right option है D, 1945। WHO has how many member nation? तो right option है B, 194। WHO has its headquarter in Geneva। तो right option है C। ये 3 MCQs इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखनी है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क एज एक्सेप्ट। तो राइट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव, इसमें कोई नहीं है, एक्सेप्ट की बात हो रही है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ नर्सिंग एंड ए यूनिवर्सिटी सिटिंग वाज एस्टेब्लिश्ड एट मिनेसोटा। तो राइट ऑप्शन है ए। एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इंक्लूड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस, क्लिनिकल नर्सिंग स्पेशलिस्ट, नर्सिंग मिडवाइफ। तो राइट ऑप्शन है डी, ऑल ऑफ द अबव। डैश इज ए सिस्टमेटिक
rational method of planning and providing nursing care. The right option is C, nursing process. Once a nurse assesses a client condition and identify appropriate nursing diagnosis, the right option is A, plan is developed for nursing care. A nursing care is dash a written guideline for implementation and evaluation. The right option is A. To initiate an intervention, the nurse must be competent in the area which include knowledge, function, and specific skill. The right option is C. The steps of the nursing process include the systemic collection of all subjective and objective data about the client, which the nurse focuses holistically on the client physical, psychological, emotional, spiritual condition. तो ये हम किस प्रोसेस में करते हैं? असेसमेंट में करते हैं. तो राइट ऑप्शन है ए. असेसमेंट डेट फोकस ऑन past medical history, family history, the reason for admission, medication currently taking, previous hospitalization, surgery, psychosocial assessment and complete physical assessment. तो हम ये किस पेज में करते हैं? इनिशियल असेसमेंट में करते हैं. तो राइट ऑप्शन है ए. Collect data about a problem that has already been identified and determine if the problem still exists or any change. तो ये कौन सा है? फोकस असेसमेंट. तो राइट ऑप्शन है ए. In this step of nursing process, you prioritize the diagnosis and order of importance and figure out what nursing intervention need to take place to accomplish these as well as goal to achieve your care plan is called planning. तो right option है A. This step begin after the care plan has been made. This is the step where the nurse perform the intervention as mean of achieving goal. तो ये कौन सा है? प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन है. ये आपने याद रखनी है. इसकी सीक्वेंस भी आपने याद रखी है कि असेसमेंट है, फिर इसके बाद डायग्नोज है, डायग्नोज के बाद प्लानिंग है, प्लानिंग के बाद इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन के बाद इवाल्युएशन है. तो ये स्टेप भी आपने याद रखनी है. And this stage you determine if the patient has achieved the expected outcome. तो राइट ऑप्शन है बी, इवाल्युएशन, जिसमें हम आउटकम को अचीव करते हैं. Which of the following is not true about focus assessment? तो राइट ऑप्शन है ए, preferably early in the morning before breakfast. After establishing a database and before the identification of nursing diagnose, what does a nurse do? तो राइट ऑप्शन है बी, analyze of database. Information verbalized or stated by the client. तो राइट ऑप्शन है सी, सब्जेक्टिव डेटा. सब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो हमें मालूम नहीं होता. मतलब कि सिम्टम जो है ये सब्जेक्टिव डेटा है और साइन जो है ये ऑब्जेक्टिव डेटा है. ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा होता है जो हमें मालूम होता है, हम देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. सब्जेक्टिव डेटा हमें क्लाइंट बता देता है, हमें पता नहीं होता. जैसा कि पेन है ये सब्जेक्टिव डेटा है, ये क्लाइंट को पता होता है, हमें पता नहीं होता. ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल इंफॉर्मेशन. तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव डेटा है जिसको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं. तो ये राइट ऑप्शन है ए, ऑब्जेक्टिव डेटा. As a goal outcome and intervention are developed, the nurse must be aware of and committed to acceptable standard of practice from nursing and other disciplines. A client-centered goal is a specific and measurable behavior or response that reflects well-formulated client-centered goal should be all of the above. तो right option है D. For a client to participate in goal setting, they should be alert and have some degree of independence. तो right option है A. The nurse write an expected outcome statement in measurable term. तो right option है client will report FON equity less than 4 on a scale of 0 to 10. To initiate an intervention, the nurse must be competent in 3 areas which include knowledge, function and specific skill. तो right option है A. Which of the following statement about the nursing process is most accurate? तो right option है D. The state board examination for professional nursing practice now use the nursing process rather than medical specialist as an organizing concept. तो right option है D. When calling the nurse consultant about a difficult client center
Problem: the primary nurse is sure to report the following. So right option is A. Length of time the current treatment has been in place. The following statement appear on the nursing care plan for immunosuppressed client. The client will remain free from infection throughout hospitalization. This statement is example of short-term goal. The planning step of nursing process include which of the following activity? Setting goal and selecting intervention. So right option is D. When establishing realistic goal, the nurse know resource of the healthcare facility, family and client. So right option is B.